Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Students, again, I am in front of you, Mr. Saidullah Khan. Today, we will start the part 2 of literary devices, which is used in the novel The Lord of the Flies. ठीक है? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में जो जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं उसको हम यहाँ पे फिर डिस्कस कर रहे हैं. Actually, we are just going to solve the questions 3B. Okay, so please pay attention. According to the new paper pattern के मुताबिक जो जो devices आपसे पूछी जा सकती हैं, possibles हैं, वो सारी मैं यहाँ पर one by one along with the examples from your novel, आपके novel से means in your literature, जो हमारा literature में prescribed by the फेडरल बोर्ड, उसी के मुताबिक सेकेंड ईयर इंग्लिश का ये सिलेबस आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ. ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारे पास है एलिगरी. व्हाट इज एलिगरी? एलिगरी क्या होती है, पहले इसको डिफाइन करते हैं. एलिगरी इज अ नरेशन और डिस्क्रिप्शंस इन विच इवेंट्स, एक्शंस, कैरेक्टर्स, settings or objects represents specific abstractions or ideas. Allegory वो चीज़ है जो एक narrations है, एक बयान है. descriptions मतलब किसी चीज़ को बयान करना, describe करना. in which जिसमें events, वाक़यात भी हो सकते हैं, actions भी हो सकते हैं, characters भी हो सकते हैं, settings भी हो सकती है, objects भी हो सकते हैं. ये क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्शंस और आइडिया, किसी भी एक ख़ास तस्वुर को या एक तख़य्युल को, उसको पेश करते हैं. एलिगरी जनरली ऑपरेट्स ऑन 2 लेवल्स. ये 2 लेवल्स पर ऑपरेट की जाती है. एज अ लिटरेरी डिवाइस, द अनकंसील्ड और सरफेस नैरेटिव. अनकंसील्ड इसका मतलब ओवर्ट होता है, मतलब बिल्कुल ओपन, और सरफेस नैरेटिव होती है. डिस्क्रिप्शंस इज मेंट टू हैव इनफ लिटरली एलिमेंट्स टू बी अ stand alone to have enough literary elements to be stand alone work that is interesting and or in entertaining by itself. Interesting भी हो सकती है और entertaining भी हो सकती है. However, the emphasis of allegory is typically placed on the abstract ideals. Allegory में जो यानी focus होता है, emphasis होता है, वो abstract ideals पे होता है, represented or symbolized by the work's literary elements. In other words, the meaning behind the surface narrative has even greater value as a literary work. Though many allegories are intended to be didactic in providing a moral, ethical और religious lesson. वो moral, अखलाकी, religious lesson भी देती हैं. Not all allegories set out to achieve this goal. जरूरी नहीं कि सारे allegories इन्हीं चीज़ को अचीव करें. अब आपको समझ आया होगा कि allegory होती क्या है. Now, example of allegory from our novel. Lord of the Flies is an allegorical novel that shows, या it shows, दो भी नहीं कह सकते हैं, that when the civilization or leadership is absent and there is no fear of law and authority, human nature has more inclination to fall prey to vice. इसका यहाँ पे क्या आइडिया आ रहा है, ज़रा देखिएगा कि ये एलिगरी है. क्यों? इसलिए कि इसमें सिविलाइजेशन और लीडरशिप की प्रेजेंस नहीं है, एब्सेंस है. लॉ और अथॉरिटी का कोई खौफ नहीं है, ठीक है, कोई एडल्ट नहीं है. ये एक एलिगरी है. सेवेजरी हैज़ द पावर टू टेक ओवर एज द बीस्ट. सेवेजरी ब्रूटैलिटी को भी कहते हैं, वैश्याना अमल. पावर, ताकत जो है ना, वो ओवरटेक कर गई है बीस्ट पर. डिस्पाइट इट्स एब्सेंस, इसकी गैर मौजूदगी के बावजूद, टेक्स ओवर द एंटायर ग्रुप ऑफ द बॉयज एंड टेरिफाइज द
littleness. It could littleness मतलब छोटे. It could also be an allegory that when a war is taking place between the adults, another war is between innocence and savagery. It is a complete allegory which is mentioned in our novel. Okay, now next. एंटागोनिस्ट. क्या चीज होती है एंटागोनिस्ट? एंटागोनिस्ट मीन्स अगेंस्ट. एंटागोनिस्ट का मतलब अगेंस्ट ऑफ प्रोटैगोनिस्ट. एंटागोनिस्ट एंड प्रोटैगोनिस्ट आर द एंटोनिम्स टू ईच अदर. एक दूसरे के एंटोनिम्स. एंटागोनिस्ट का मतलब मुखालिफ, मुखालफत. अब देखिए एग्जाम्पल्स. जैक मेरिड्यू इज द एंटागोनिस्ट ऑफ द नॉवेल. वाई? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज. इस नॉवेल में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है वो एंटागोनिस्ट है जैक मेरिड्यू, because he stands against the order and civilization that Ralph and his rational friend want to bring. जो रॉल्फ और उसके दो साथी हैं वो जो भी यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर अप्लाई करना चाहते हैं वो उसके अगेंस्ट है. He rather includes in savagery and killing whatever comes in the way of him and his hunters. Understood? तो एंटागोनिस्ट भी आपको समझ आ गया. ये एक और लिटरेरी डिवाइस थी जो आपके नॉवेल में इस्तेमाल किए. एनी डिवाइस कैन बी आस्क्ड इन पेपर. इट इज स्किल बेस्ड एंड अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग. ओके, अंडरस्टूड. नॉलेज, स्किल बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग पे मुश्तमिल ये पेपर. एल्यूजन्स क्या होता है? एल्यूजन्स की मीनिंग यहाँ पे नहीं, मैं आपको बताता हूँ. रेफरेंसेस होते हैं. एल्यूजन्स मीन्स गिव रेफरेंसेस. आप अपने नॉवेल में किसी चीज का रेफरेंस दें तो वो एल्यूजन्स कहलाता है. देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ द बिब्लिकल एल्यूजन्स गिवन इन द नॉवेल. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में बहुत सारे बिब्लिकल एल्यूजन्स हैं. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जैसे साइमन alludes टू जीसस क्राइस्ट. ये साइमन को alludes किया गया. alludes इज अ वर्ब, allusion इज अ नाउन. ठीक है ना? allusion का मतलब हवाला देना. ये रेफर्स करता है, ठीक है, क्राइस्ट को. while the head of the pig alludes to Satan that makes human being to go astray from the true path, जो इंसान को बहकाता है. on the other hand, इसके बरक्स, Jack is the representative of Judah. जुदा जानते हैं आप कौन है? ये वो शख्स है यहूदी जिसने हजरत ईसा अलैहि सलाम को सोल्ड किया था. and the lawn is island. Lawn island is an example of paradise. और वो लॉन आइलैंड जो एग्जाम्पल ऑफ पैराडाइज है. ये एल्यूजन्स है. पैराडाइज का एल्यूजन्स दिया, बिब्लिकल एल्यूजन दिया, सैटन का रेफरेंस, ये सारे बिब्लिकल एल्यूजन्स हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट है क्या चीज? पहले ये समझ लेते हैं. In literature, conflict is a literary element that involves a struggle between two opposing forces. दो opposing forces के दरमियान एक struggle है. Usually a protagonist and an antagonist. Understood? Protagonist, antagonist अभी मैंने समझाया आपको. इनके दरमियान एग्जाम्पल क्या है? There are two types of conflicts in the novel. इस conflicts में दो types के है, क्या कहते हैं, सॉरी, इस नॉवेल में टू टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. सपोज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, द फर्स्ट वन इज बिटवीन मैन एंड नेचर as it goes on between the boys and the situations on the island where they are to live. The second is about men and men and men, men and men and men, and self, which goes on between Ralph and Jack and Ralph and his thinking. इनके दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स यू कर समझ लीजिए. कैरेक्टर्स आर द एलिमेंट्स. ये डेफिनेशन सुन लीजिएगा. इसमें डेफिनेशन है लेकिन मैंने कहा था मैं डायरेक्ट समझा दूंगा, हो सकता है मेरे जन से निकल गए तो सुन लें. कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर स्टोरी बिल्डर्स होते हैं, यानी जो स्टोरी को बिल्ड्स कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट्स कर रहे होते हैं. कैरेक्टर्स उन्हें कहते हैं. ठीक है. अब देखिए, इससे पहले मैं कैरेक्टराइजेशन पढ़ा चुका हूं आपको प्रीवियस वीडियो में. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज प्रेजेंट्स बोथ स्टैटिक as well as the dynamic characters. Ralph is a dynamic character
as he goes through various changes and has several issues to deal with, while Jack Meridew is also a vibrant character on account of his ambitious and unpredictable nature. Piggy, however, is a static character in that he does not witness any change in his thinking from the first day to the last. Simon too is a static character. Understood? कैरेक्टर समझ आ गया होगा. इस तरह आपने एग्जाम्पल्स भी देनी है, उन्होंने एग्जाम्पल्स भी मांगी है. पहले डिफाइन करेंगे, देन यू विल गिव द एग्जाम्पल. नेक्स्ट, क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स की एग्जाम्पल पहले भी मैं ऑनलाइन कई मरतबा पढ़ा चुका हूँ बच्चों को. अगेन, क्लाइमैक्स इज अ ग्रीक टर्म, मीन्स लैडर. इसके मैंने सीढ़ी के होते हैं. इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन अ नैरेटिव. कोई हम चीज बयान कर रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है एट विच द कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन हिट्स द हाईएस्ट पॉइंट. कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई टेंशन, वो अपने एक हाईएस्ट यानी पीक पॉइंट को टच कर लेती है. इट इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ अ प्लॉट. ये प्लॉट का एक स्ट्रक्चरल पार्ट भी होता है, ठीक है. एंड इज एट टाइम्स रेफर टू एज अ क्राइसिस. इट इज अ डिसिसिव मोमेंट और अ टर्निंग पॉइंट. ये एक ऐसा मोमेंट होता है, टर्निंग पॉइंट और डिसिसिव मोमेंट होता है. टर्निंग पॉइंट होता है, नॉवेल अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, स्टोरी अप एंड डाउन हो रही होती है. इन अ स्टोरी लाइन एट विच द राइजिंग एक्शन टर्न्स अराउंड इनटू अ फॉलोइंग एक्शन. Thus, a climax is the point that which a conflict or crisis reaches its peak. आ गई वही बात, समझ आ गई. कॉन्फ्लिक्ट हो या क्लाइमैक्स, वो क्राइसिस हो, अपने पीक पर पहुंच रहा होता है. देन कॉल्स फॉर अ रेजोल्यूशन और डिनोमेंट, मतलब कंक्लूजन, अपने कंक्लूजन पे पहुंच रहे होते हैं. In a 5-act play, the climax is close to the conclusion of Act 3. Later in the 19th century, 5-act plays were replaced by 3-act plays, and the climax was placed close to the conclusion at the end of the play. तो climax समझ आया? An example of climax from Lord of the Flies. इसमें देखिए, climax in the novel arrive. In the novel, the novel सम्राट, यहाँ पे Lord of the Flies की बात कर रहे हैं. Arrives when Simon sees Lord of the Flies and realizes that it is a beast, but then realizes that everybody has a beast in his mind. Understood? समझ आ रहा है? हर शख्स अपने ज़हनी तौर पर उसके अंदर माइंड का होता है, उसके दिल में, उसके नेचर में एक बीस्ट है. That is why when he tries to come back and join the boys, they kill him. उसे कत्ल कर देते हैं वो लोग. Considering him as prey, उसे क्या समझते हैं? शिकार. However, when Jack engineers the killing of Piggy, this is the anti-climax of Lord of the Flies. ये एक anti-climax भी इसका, ठीक है. क्लाइमैक्स भी है, साथ साथ एक एंटी क्लाइमैक्स. अब एंटी क्लाइमैक्स का एक मतलब फिर देख लीजिए. एंटी क्लाइमैक्स अकर्स व्हेन द इमोशनल इंटेंसिटी डिक्लाइंस फ्रॉम अ हाई टू अ लो पॉइंट. दिस कैन अकर विद इन एन इवेंट और इवन सिंपली अ सेंटेंस. कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स क्या है? जब हमारा इमोशनल इंटेंसिटी डिक्लाइंस की तरफ जा रही होती है, फ्रॉम अ हाई टू लो पॉइंट, हाई से लो पॉइंट की तरफ जा रही है. दिस कैन अकर विद इन एन इवेंट, एक इवेंट भी हो सकता है, और सिंपली अ सेंटेंस भी हो सकता है. एग्जाम्पल, कम बैक एंड ज्वाइन द बॉयज, दे किल हिम कंसिडरिंग हिम एज प्रे. हाउएवर व्हेन जैक इंजीनियर्स द किलिंग ऑफ पिगी, दिस इज द एंटी क्लाइमैक्स ऑफ लॉर्ड ऑफ द फ्लाई. अभी मैंने इसके पिछले एग्जाम्पल्स में दे दिया. क्लाइमैक्स के साथ उसमें एंटी क्लाइमैक्स भी आ गया. ओके, नेक्स्ट, foreshadowing. Foreshadowing is also an important point in literary device.
Foreshadowing is a literary device that writers utilize as a means to indicate or hint to reader something that is to follow or appears later in a story. Foreshadow से मुराद पहले से उसके बारे में कोई predictions अल्फाजों के जरिए कैरेक्टर के जरिए यूटिलाइज कराने की कोशिश करता है इन द स्टोरी दैट इज कॉल्ड फोरशैडो. Foreshadowing, when done properly, is an excellent device in terms of creating suspense. Suspense create करने के लिए foreshadowing की terms बेहतरीन है. And dramatic tensions for readers. It can set up emotional expectations of characters, behavior, and or plot outcomes. This can heighten a reader's enjoyment or a literary work, enhance the work's meaning, and help the reader make connections with other literature and literary terms or literary themes. That is called foreshadowing. I think so you are getting my words. Example of foreshadowing in the novel. देखिए example. There are several examples of foreshadowing in Lord of the Flies. The first example of foreshadowing in the novel occurs when the boys gather together for voting, and it is wise that there may be a beast. इनकी आवाज ऐसी लगती है जैसे may be a beast. The ensuing argument shows that it would be there soon. ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे होने वाला है ऐसा कुछ. Even if it does not exist. हालांकि वो मौजूद नहीं था लेकिन ऐसा फील हुआ. The second example of Piggy, who continuously refers to his aunt, जो मुसलसल अपनी आंट्स को रेफर करता है, which shows that he always needs somebody to depend on him. जो ये शो करना चाहता है कि जैसे वो किसी पर इसको नीड्स है कि somebody की to depends on him, कि वो इस पर डिपेंड करे. Third example, the third good example is the discovery of Conch and advice of Piggy, which points out the Piggy is the supplier of ideas to Rolf, who is nothing without him. जो उसके बगैर कुछ भी नहीं. That is called foreshadowing. Next है hyperbole. Hyperbole क्या चीज़ है? Hyperbole exaggerations को कहते हैं. मुबालगा आराई, over praised, ठीक है, over defined, जैसे कहते हैं over described. Exaggeration occurs, या hyperbole occurs when Piggy and Rolf find the couch on the seashore, and Piggy thinks that the couch will bring order and authority to Rolf. अब ये exaggeration है ना कि couch कैसे ला सकती है couch order और authority Rolf के लिए, that he will use with his ideas. However, it proves a pipe dream for him. For how a simple conch can bring order and authority among the unruly children. Understood? That is called exaggeration and hyperbole. Imagery. क्या चीज़ है imagery? Imagery means to use to present an image that shows the use of sense by the readers or audience to identify it. इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी चीज़ को एक इमेज बनाया जाता है, उससे रीडर्स और या ऑडियंस आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जहन में खाका बनता है. दैट इज कॉल्ड इमेज. सच एज राल्फ इज शॉन हैविंग लैंडेड लाइक अ कैट. जैक इज शॉन बिहेविंग एज एन ऐप. अब इमेज बन रहा है. लाइक द लिटनेस आर शॉन एज इंसेक्ट्स. Also, the sea is shown as a creature, while the fire is shown as a jugger. ठीक है ना? In fact, Lord of Flies is full of natural imagery, as the locations and the characters demonstrate it.
amply. Understood? Ample बहुत ज्यादा, a lot of. ठीक? Imagery समझ आ गया. Metaphor, इसमें metaphor भी यूज किए गए. Metaphor Lord of the Flies shows decent use of various metaphors. Metaphors जानते हैं? डायरेक्ट कंपेरिजन वन थिंग टू अनदर, उसे कहते हैं, जैसे उर्दू में स्तारा कहते हैं. देन द क्रिएचर स्टेप फ्रॉम marriage on to mirage on to clear sand, and they saw that the darkness was not all shadow but mostly clothing. चैप्टर 1 में दिया गया क्लोथिंग. यहां पर ये मेटाफर है. He was a shrimp of a boy about 6 years old, and one side of his face was bought by a mulberry colored birthmark. चैप्टर 1 में दिया हुआ ये भी एक मेटाफर है. ऑन वन साइड द एयर वॉज कूल, एक तरफ तो हवा कूल है, बट ऑन द अदर द फायर थ्रस्ट आउट अ सेवेज आर्म ऑफ हीट दैट crinkled air on the instant. चैप्टर 2 में ही एग्जाम्पल. The first metaphor shows the comparison of darkness with the clothing, the second boy with the shrimp, and the third fire with the savage creatures. ये सारे metaphors हैं इसमें. ठीक है. Next, motif. What motif is? Motif is an object or idea that repeats itself throughout a literary work. यानी एक आइडिया या कोई ऑब्जेक्ट होता है जो पूरी कहानी में रिपीटेड होता है. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव्स ऑफ द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आर द कॉन्च, ग्लासेस ऑफ पिगी एंड द बीस्ट. अंडरस्टूड? अगर ये क्वेश्चंस आ जाए तो आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं. नैरेटर्स क्या होते हैं? अब एक सवाल यहां पैदा होता है, नैरेटर्स. एक्चुअली नैरेटर्स क्या है? नैरेटर्स वो होते हैं जो बयान कर रहे होते हैं कोई चीज. जैसे इन लिटरेरी टर्म्स इट इज अ पर्सन हु नरेट्स द स्टोरी फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू. देयरफॉर कुड बी सेवरल टाइप्स ऑफ नरेटर्स इन लिटरेचर. लिटरेचर में कई किस्म के नरेटर. फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है. इसमें कई टाइप्स के, जैसे फर्स्ट पर्सन नरेटर, सेकंड पर्सन नरेटर भी हो सकता है, थर्ड पर्सन नरेटर भी होता है. ऑमनीसेंट नरेटर भी होते हैं. ऑमनीसेंट थर्ड पर्सन होते हैं. ठीक है ना. एंड जो हर जगह मौजूद होते हैं. प्रोटेगोनिस्ट नरेटर हो सकता है, प्राइमरी नरेटर हो सकता है, सेकेंडरी नरेटर हो सकता है, अटैच नरेटर हो सकता है, ऑब्जर्वर जिसे हम कहते हैं, अनरिलायबल नरेटर हो सकता है, कमेंटेटर हो सकता है, इंटरव्यूअर हो सकता है, और सीक्रेट ऑब्जर्वर हो सकता है. ठीक है. ये सारे नरेटर्स हो सकते हैं. नरेटर्स की एग्जाम्पल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से ये है. द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज यूजेस द थर्ड पर्सन एज अ नरेटर ऑफ द स्टोरी. उसने थर्ड पर्सन के हिसाब से स्टोरी को नरेट किया है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑमनिसेंट नरेटर्स. इसको ऑमनिसेंट नरेटर भी कहते हैं जो थर्ड पर्सन होता है. हियर द ऑथर विलियम विलियम गोल्डिंग इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. वो खुद है इसलिए वो थर्ड पर्सन है. अंडरस्टूड? पर्सोनिफिकेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं ना, अपने क्या कहते हैं लिटरेचर्स में भी, और पहले भी इसमें पोइट्री वगैरह में आप पढ़ चुके हैं. मीन्स टू एट्रीब्यूट ह्यूमन एक्ट्स एंड इमोशंस टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. मतलब द क्वालिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स टू बी गिवन नॉन लिविंग और नॉन ह्यूमन. ह्यूमन या लिविंग की क्वालिटी नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग को दी जाए, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. सपोज इसमें लिखा, स्मोक वॉज राइजिंग हियर एंड देयर अमंग द क्रीपर्स दैट फेस्टून द डेड और डाइंग ट्रीज. As they watched, a flash of fire appeared at the root of one wisp, and then the smoke thickened. Small flames stirred at the trunk of a tree and crawled away through leaves and brushwood, dividing and increasing. Chapter 2. The flames
as through they were a kind as though they were a kind of wildlife crept as a jaguar creeps on its belly toward a line of birch like saplings that fledged an outcrop of the pink rock. Then the roof of the leaves broke up and they halted, breathing quickly. देखिए सांस ले रही है वो नॉन लिविंग थिंग. Looking at the few stars that pickle around the head of the mountain. These three examples shows a smoke, flame and then roof as if they have human emotions. ऐसा लगता है जैसे ये human emotions है रूफ की और स्मोक की इमोशंस उनके एक्शंस उनके इमोशन ऐसा लगता है जैसे जानदार चीजें. दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. प्रोटैगोनिस्ट अभी एंटागोनिस्ट समझाया था उसके अगेंस्ट होता है. रॉल्फ इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवेल. रॉल्फ जो है वो प्रोटैगोनिस्ट है, फेवर की सोचता है, पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव बिहेवियर उसका. ही स्टार्ट्स द नॉवेल. सॉरी ये इसको खत्म करते हैं. He starts the novel and captures the interest of the readers until the last page when he feels for his life. Besides, he is the primary motivator of the order and civilizations on the island. That is called protagonist. Paradox क्या है? A paradox is a statement that appears at first to be contradictory. पैराडॉक्सेस क्या होते हैं? पैराडॉक्सेस ये होते हैं कि एक स्टेटमेंट होती है जो पहले कंट्राडिक्टरी होती है बट अपॉन रिफ्लेक्शन देन मेक्स सेंस. जब हम उसे गौर करते हैं तो उस पर कोई सेंस बनती है. दिस लिटरेरी डिवाइस इज कॉमनली यूज टू इंगेज अ रीडर टू डिस्कवर एन अंडरलाइंग लॉजिक in a seemingly self-contradictory statement or phrase. As a result, paradox allows readers to understand concept in a different and even non-traditional way. इसे कहते हैं paradox. Example paradox की देख लीजिए. Lord of the Flies shows the use of paradox in the behavior of the boys that fear is not outside but in their minds. Outside नहीं the fear, लेकिन उनके माइंड में था. ये पैराडॉक्स है. बाद में पता चला therefore it is a paradox. इसलिए पैराडॉक्स. नेक्स्ट थीम क्या होता है आप सब जानते हैं. सेंट्रल आइडिया होता है दैट द नॉवलिस्ट और द राइटर वांट्स टू स्ट्रेस अपॉन. The novel Lord of the Flies not only shows the theme of conflict between vice and virtue, बुराई और नेकी के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसका मेजर थीम है, बट ऑल्सो वेरियस अदर थीम्स सच एज लॉस ऑफ इनोसेंस है, वैल्यू ऑफ ऑर्डर है एंड अबव ऑल द नेचर ऑफ मैन है. ये सारे इसके थीम है. ठीक है, थीम एक अलग डिवाइस थी. सिमिली आप सब जानते हैं. सिमिली जो होती है कंपैरिजन होता है जिसमें सच एज लाइक के वर्ड लगाकर कंपेयर किया जाता है. जैसे इसमें इन्होंने कहा अ रॉक ऑलमोस्ट डी अटैच्ड स्टैंडिंग लाइक अ फोर्ट. लाइक अ फोर्ट रॉको का सिमिली. ठीक है, फिर फेसिंग देम अक्रॉस द ग्रीन विद वन बोल्ड पिंक bastion. The breezes that on the lagoon had chased their tails like kittens. अब tails like kitten ये भी इसका क्या है, सिमिली है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी जल्दी, बहुत टाइम हो जाएगा, इसको डिटेल में मजीद जाएंगे. तो वन पेज टच्ड अ ट्री ट्रंक एंड स्क्रम्बल्ड अप लाइक अ ब्राइट स्क्वायरल. एक यानी खूबसूरत सी और शौकीली सी क्या कहते हैं, स्क्वायरल मतलब गुलहरी. वो ये द फर्स्ट सिमिली कंपेयर्स अ रॉक टू अ फोर्ट. अब देखिए इसमें एग्जांपल दे रहे हैं, इसको कंपेयर करके बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं. यहाँ पे कंक्लूजन है कि पहली जो सिमिली इसमें वो कंपेयर करती है रॉक को फोर्ट से. इसी तरह सेकेंड है ब्रीज टू किटन, ब्रीज को किटन से. एंड थर्ड क्या है, पेच टू अ स्क्वायरल, पेच को स्क्वायरल से. अंडरस्टूड, दीज आर द सिमिलीज. सिंबल्स क्या है इसमें, बस बेटे ये एंड होने वाला है. मैंने चाहा कि आज एक ही वीडियो में सब बना दूं. सिंबल्स क्या है, सिंबल्स किसी को देखकर अलामत को कहते हैं, कोई निशान को कहते हैं. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज शोज दैट द सिंबल ऑफ बेस्ट
ग्लासेस बीस्ट होगा, नहीं, द बेस्ट ग्लासेस, फायर, एडल्ट्स, ओशंस एंड द आइलैंड, ये सिंबल है इसके। आयरनी क्या चीज होती है? आयरनी इज अ लिटरली डिवाइस इन विच कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और द सिचुएशन reveal a literally that is different from what appears to be true। यानी आप ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है या सिचुएशन भी हो सकती है, जो रियलिटी होती है उससे डिफरेंट होता है, ये उससे डिफरेंट अपियर होता है डेट टू बी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, irony of the novel Lord of the Flies is shows irony when the boys are engaged in talking about the beast, but only Simon knows it। सिर्फ साइमन था जो इसको जानता है कि though he is unable to express it, ये इसकी irony है, वो उसको express नहीं कर पाया। Understood? Alhamdulillah, we have completed a lot of literary devices which is used in the Lord of the Flies. Lord of the Flies में many more. If you ask, so yeah, I will help you, and I just try my level best to make another video. Okay, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिस हद तक लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। इल्म है जहाँ तक फैले फैलाइए। अल्लाह ताला आपको भी इसकी जज़ा देगा और मुझे भी बड़ी मेहनत की है। अल्लाह ताला इस मेहनत को कामयाब करे और आपको अच्छे नंबर से कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के लिए रहिए। अभी पूरा पेपर जो है ना मैं इसको सॉल्व करवाऊँगा इस पर इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।